Hey everyone, so welcome to Vet It's You. It's Dr. Ankit Kaushik. So welcome to the very new episodes of Vet Talks. Here we have a very special guest from Apollo College of Veterinary Medicine, Dr. Amaan Ghazi. Hey Amaan, how's you doing by the way? First of all, thank you, Dr. Kaushik, for inviting me to the Vet Talk. Well, I'm doing very good. Hope you are doing well as well. So tell me about yourself. Who is Dr. Amaan Ghazi? जिनको नहीं Uh, पता होगा, right now he is in internship in Apollo College of Veterinary Medicine. Tell me. sure. I am a writer, a veterinarian, as I'm studying in doing internship, and I'm a founder of the Geek Veterinarian. That's great. So Geek Veterinarian is the Instagram handle of Dr. Aman Ghazi. So Yes. don't follow him yet, just follow him. So tell me about you are right now in internship Yes. program 12th calendar month का होता है जिन लोगों को नहीं पता है. So what drives you towards BVSc and AH? Like Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry is such a long degree of 5.5 year. अब 5.5 साल की डिग्री करना उसके बाद अपने नाम के आगे एक डॉक्टर लगाना बहुत बड़ी बात होती है. Everybody cannot Exactly. afford this such a long time span. So what drives you towards this particular undergraduate course? To answer this, we have to go a little back into my childhood Of course. because I grew up watching a lot of animals on Discovery, on Nat Geo. I was hooked to these two channels throughout my childhood. To remember, I there was a guy, Dr. Brady Bars. He was a herpetologist, snakes, black mamba. So I was always fascinated to animals. And then I grew up, went opted for biology, and then need. And then I was like, okay, now I want to do. It was very clear for me that I don't want to do human medicine, so I opted veterinary medicine as my first priority, my first choice. So yeah, here we are Yeah, on here the we are vet in the talks. internship program. Yes. So Aman, do you have any specific expectations from this degree course? Basically क्या होता है मेरे जैसे as I joined my college in 2019 after a year drop, तो मैंने सोचा था यार Same, मेरे कॉलेज same. की expectations ऐसे होंगे वैसे होंगे, but seems to be a full fun and roller coaster ride. कुछ समझ में नहीं आता है भाई कब क्या हो गया कब कैसे हो गया. So do you have any specific expectation कि भाई मुझे कॉलेज में जाके ये तो करना ही करना है, बाकी मैं पढ़ाई तो कर ही लूंगा, I will manage other things, but कोई स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन इस पर्टिकुलर डिग्री कोर्स है यू मीन टू बी अ वेटरिनियन मींस एनिमल्स डॉक्टर, तो कुछ बैक थॉट था इसके पीछे? To be very honest, I did not have any specific expectations from it. I just wanted to be a veterinarian. That was my end goal from this degree. Okay, Yes. you want to be a good veterinarian, isn't it? Yeah, that said, I just wanted to work with animals. That was my first priority. Now, which has changed a lot. But the Okay, end goal is same. The end goal is same, to serve animals, but it has changed. The priorities has changed. so were it was the second option or was your priority serving in animal community? मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई कैन रिलेट योर आंसर. अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार तुझे एमबीबीएस के अलावा कुछ और करना था क्या, आई वुड जस्ट से नो यार मुझे एमबीबीएस करनी नहीं. थी. But I opted with the Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry after a year drop, and I am quite enjoying this degree. This degree is nevertheless from any sort of other medical degrees. उतना हमें पढ़ना होता है, उतनी चीजें सीखनी होती हैं और काफी अच्छा एक्सपोजर भी होता है. तो was it your priority, was it your option or something else, और जो मिल गया उस पे काम No. चला लेंगे? No, it was my priority to get into veterinary medicine. मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को एमबीबीएस करना है, कि एमबीबीएस नहीं मिला एक साल के ड्रॉप के बाद. Even I also took a drop. I went to quota for NEET preparations. So for me, veterinary medicine was my first priority. I went to quota with this expectation ki that I want to get into this veterinary medicine. That's great. MBBS was my second priority. हैट्स ऑफ यार. काफी Yeah, man. काफी रेयर लोग होते हैं जो वेटनरी को ऑप्शन की तरह नहीं प्रायोरिटी की तरह देखते हैं, एंड आई जस्ट such a commendable job you are doing with everything, I'll managing I'll your academics and I'll give everything you a else. yeah. I'll give you a reason why veterinary medicine was my first choice, and it has become like yes, I opted a very good subject as a discipline.
because veterinary medicine not only enables you to work with animals, also with humans. Yeah, exactly. I know veterinarians who are now working in human medicine. Yeah, Those who studied veterinary medicine and now they are working in human medicine. So it yeah, enables you to work with both humans as well as animals. yeah, So exactly. if your end goal is to serve society, you can do by being a veterinarian as well as a human physician also. Yeah, exactly. Like इसमें कोई doubt ही नहीं है कि like being a veterinarian will separates you from the human medicine. Like they both are interrelated science branches and Obviously, काफी जगह ऐसे होता है exactly, कि जहाँ पे वेटनेरियन की प्रायोरिटी होती है ह्यूमन मेडिसिन के लिए. काफी सारे ऐसे अगर आप डायग्नोसिस की बात ले लें, लाइक वी ऑल नो अबाउट डायग्नोसिस टेस्ट एंड एवरीथिंग, एवरी ट्रायल ऑफ एनी मेडिसिन इज ऑन द एनिमल्स. And animals, like exactly, animals जहाँ पे आए वहां पे वेटनेरियन का रोल आया. So this is like quite good, obviously, the way you explain the things. Like काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई वेटनरी तो एक सब्सिडियरी ब्रांच है, उसमें कितना ही क्या होता होगा. But the actual thing, when you enter in this particular degree course, will tell you the truth behind this particular science branch. तो कभी भी ऐसा नहीं होता 100%. है कि जन लोग जो लोग भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप दे विल गेट दिस कि ह्यूमन मेडिसिन भी लोगों की प्रायोरिटी होती है, एंड वेटनरी मेडिसिन इज आल्सो अ प्रायोरिटी फॉर मेनी अदर स्टूडेंट्स. और कोई भी 100%. डिग्री को कंपेयर करना, आई डोंट थिंक सो इट्स जस्टिफाइबल, क्योंकि सभी के अपने प्रोस हैं, सभी के अपने कॉन्स हैं, सभी के पॉजिटिव्स हैं, सभी के नेगेटिव्स हैं. एंड मोर डो Exactly. लेस, if you are doing well in any sort of branch, I think अमान, कि आप अगर अच्छा कर रहे हो तो शायद आप अच्छा ही करोगे. उसमें डिग्री कोर्स आपके लिए कैसा रोल प्ले करता है, आई बिल्कुल, डोंट थिंक सो कि उतना बिल्कुल, इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है. इजंट इट अमान? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ह्यूमन मेडिसिन और वेटरनरी मेडिसिन दोनों एक अलग ही एंटिटी हैं। या Like एग्जैक्टली. if we talk about human medicine, आप humans की different diseases, different infectious non infectious की बात कर रहे हो. वेटनरी मेडिसिन में हमारा सिर्फ एक डिजीजेस इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस में नहीं, हमारा स्पीसीज ही एकदम से हो जाता है. वी आर डीलिंग विद ऑन अ रेगुलर बेसिस, वी आर डीलिंग विद केनाइन, इक्वाइन, feline, या ruminants. या Like एग्जैक्टली. we have a bunch of variety, and I didn't mention poultry, the birds. या We ऑफ are also कोर्स. dealing with them. Yeah, of course. Like, to be very honest, like, except from Homo sapiens, we are going to treat everybody else. Like, except from Obviously, we have to exactly. study about them, we have to treat about them, we have to learn everything. Like, from the Everything medicine is point of view, from the surgery point of view, from management purpose, from like laboratory test, everything is like specific with a specific species. obvious. Not only this, both their like anatomy, their physiology, Yeah, everything is exactly. different. A dog anatomy and a physiology is very different from a poultry. Yeah, exactly. If Like, it if you take a pigeon or a hen on one hand, and if you take a dog on the other hand, both are different. yeah, exactly. Like from the species wise, the anatomy, the physiology, the feeding, the nature, the behavior, everything is different. So we have to look from every perspective, every side of this Yeah, medicine. exactly. Yeah, and like those people जो think कि यार एमबीबीएस में तो बहुत पढ़ना पड़ता है, वेटनरी में तो कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता, आई डोंट थिंक सो कि उन लोगों को कुछ भी पता है. लाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, Exactly. मेरा वेट टॉक बनाने का भी मोटिव ये था कि लाइक लोगों को पता तो चले कि लाइक देयर आर सो मेनी वेटनेरियन, सो मेनी एस्पायरिंग वेटनेरियन स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप स्टूडेंट्स हु आर लाइक डूइंग सो गुड. लाइक जरूरी नहीं होता है कि भाई आप एमबीबीएस ही करते हो. लोगों का बहुत सोचना होता है कि भाई हम एमबीबीएस नहीं कर पाए, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. एंड I feel like I feel like it is the people's perspective that needs to change या एग्जैक्टली. on a larger scale, especially even in the veterinary society. Most of the veterinarians who are becoming veterinarians, they feel like अरे हमें तो MBBS नहीं मिला इसलिए हमने veterinary ले लिया, just नाम के आगे डॉक्टर लगाना था. या This is the एग्जैक्टली. reason this thing has to be changed in the veterinary society या internally. Only then we can expect the change from the outside society who are outside of not society. Yeah, veterinarian. exactly. Right? Like, Internally, we are so damaged and collapsed that we expect the other person to understand. We are not understanding the importance of our field. Then how we can expect someone else somebody from the else. outside? Yeah, exactly, exactly. Like हम So अपनी ही that वैल्यू को नहीं needs समझ पा रहे हैं अभी. शायद काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी ही वैल्यू को exactly, नहीं समझ पा रहे हैं, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद द थिंग. लाइक भाई पहले खुद की वैल्यू को तो जानो. लाइक यू आर प्राइसलेस, देन एवरीबॉडी विल स्टार्ट obviously. वैल्यूइंग यू. लाइक वन you हु are कैन. dealing you are dealing with multiple species. This should be a game changer for you. या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, This टोटली एग्री. just take a pause and think this through. Like you are dealing with multiple species.
and you're dealing with a life, and that animal is not unable to speak, unable to it gives you a very much advantage on other disciplines. If we compare it with human medicine, if I have pain in my here, I can go to the doctor like, I'm having pain here. A dog, a cat cannot tell. They will just whine, they will cry, they will roar, they will be dull and depressed. So you have to use your knowledge, your emotion, your senses to diagnose the disease, right? So it's a big thing for a veterinarian. Yeah, exactly, exactly. Moving on, Aman. So, like, why you Yeah. choose the private college? Like, Apollo College of Veterinary Medicine is a private veterinary college, and it's a reputed veterinary college. You could have taken more drops and go for a government college. Like, people's perspective होता है society में कि, like, someone passing from a private college or someone passing from a government college, दोनों में बहुत difference आ जाता है. दोनों के practical aspects, study aspects, everything is like quite बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है लोगों के हिसाब से. बट यू चूज अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज. एंड Indeed. आई थिंक सो इट्स लाइक क्वाइट फर्स्ट कॉलेज जो Yeah, प्राइवेट first, सेक्टर में yeah, first खुला private, था. yes. And like there are so many good alumni from that particular college, but what drives you towards that? Like you could have taken such more drops. Like बहुत normal होता है, I like bio वाले students yes. ले लेते हैं ड्रॉप, कोई बड़ी बात नहीं होती. एंड मुझे लगता भी नहीं है ड्रॉप लेना कभी गलत है या ड्रॉप लेना सही है. ये लोगों की हिसाब की थिंकिंग है. लाइक मेरे के लिए था कि मैं 1 साल के ड्रॉप में हैप्पी था, लाइक मुझसे नहीं हो पाएगा. और बहुत सारे लोग होते हैं कि जो 6 6 साल के ड्रॉप लेते हैं, नाउ दे आर हैप्पी. सो लाइक व्हाट ड्राइव्स यू, लाइक मुझे प्राइवेट ले लेना चाहिए या मुझे साल खराब नहीं करना था? व्हाट वाज द थिंग बिहाइंड ऑल दिस? I'll answer this question in two phases. The first Yeah, one is first. why I opted for a private college. It had to be by chance. Okay. Like I tried for getting into government college, and then I could not because of few numbers and counseling. I went here and there. Yeah. So I opted Apollo College. Yeah. And the second question is the I also took a drop, 1 year drop. So I gave my chance as well to the NEET preparation again. So I could not get it. So I opted for no regrets though. Yeah, yeah, there shouldn't be no Yeah. regrets. Like, I don't think Yes. so. कि, Yes. a student from a private veterinary college or a government veterinary college is like, कहीं से भी उनमें कोई comparison करा भी जाए To तो like someone will uh prove less or someone will prove more superior. ऐसा to कुछ give भी नहीं you है. a big spoiler, Yeah. it's just a private college by name. It's a government entity. Okay, The okay. the working, the teaching, everything is same as a government. I Yeah, don't see like we people have this perception that you will get more marks, you don't have to write internals or anything manuals. It's all BS. You have to do everything. yeah, you have to do They everything. you are under the scope, and we get this pressure also. Like we get labeled like you are from a private public this private institution, so we also have to work on ourselves more harder than the Exactly, government institutions exactly, to prove exactly. no, we are not just like private. This I should not name those universities, but it is something Yeah, thing that people I can have that. totally understand this. I can totally understand this. कि Yeah, भाई प्राइवेट कॉलेज से हूँ इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई एवरीथिंग लाइक मुझे कि आदमी ने कि परोस के मजे दे ही दिया कर है. रहे हैं कुछ. मजे ही हाँ, मजे, कि ऐसा पढ़े कुछ ही. भी नहीं होता. हाँ, नहीं है. लाइक मैं जितने भी व्यूवर्स देख रहे होंगे, इफ यू आर फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेज एंड यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द नीट दिस ईयर, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज आप अफोर्ड कर पाते हो और आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, सो वहां पे भी चीजें उसी हिसाब से होती है जो एक एक्चुअल गवर्नमेंट कॉलेज में होती हैं. लाइक एमएसवी 2016, Obviously, वी हैव टू फॉलो इट. right. कॉलेज हैव टू फॉलो इट. Obviously, you उसके अलावा, ultimately you become a veterinarian. yeah, You graduate ultimately you from will become a a veterinarian. You will get yourself registered with the council only, registered whether you passed out and from a government college or whether you passed out from प्राइवेट कॉलेज. और private बेसिक college. मोटिव ये होता है कि भाई आपने अपने ऊपर कितना काम करा, isn't it? Obviously, you said exactly. आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप क्या करते हो उस डिग्री से. Yeah, आप exactly. आईवीआरआई से ले लो, आप आईवीआरआई से डिग्री ले लो या अपोलो से डिग्री ले लो, you have Yeah. to prove it yourself. Yeah, No of one course you else is have to. going to do. No one else is going to spoon feed you the world 5.5 years. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूं तो मुझे बिल्कुल स्पून नहीं, फीडिंग होगी, या मैं प्राइवेट कॉलेज से हूं तो मुझे प्राइवेट कॉलेज वाले नंबर दे देंगे. ऐसा अगर किसी के दिमाग बिल्कुल में ये नहीं है. मिथ रहता है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. And thanks to Dr. Aman, like he agreed for this vet talk, and I just thought कि Uh, बहुत सारे लोगों के मन में जो myth रहता है कि भाई
प्राइवेट वाले क्या ही करते होंगे, कुछ भी नहीं करते होंगे, एंड ही इज डिफाइंग ऑल They, दोस थिंग्स. I feel like they should go and get themselves enrolled to a private Yeah, of veterinary course. college, Yeah, then they will get the taste of the medicine. yeah, exactly, exactly. Moving on, like something that you love about your college, like सभी के like एक चीज होती है, like मेरे कॉलेज में मुझे ये बहुत पसंद है, मेरे कॉलेज में मुझे ये बहुत पसंद है, like what you like about your college, like अपोलो वेटरनरी कॉलेज, like सभी लोग जानते होंगे, काफी रेप्यूटेड कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है, काफी अच्छी एलुमनाइज Yes. पास आउट हुई हैं इस कॉलेज से. So like Aman, what you like about your college, like? It had to be the fun time we get to spend. Like I'm a backbencher. Like Right. you know the fun backbenchers have, right? Yeah, So exactly. backbench memories had to be the one of the best thing that I can say about my college time. So like right now Now you now are I'm in. in now I'm in internship. I don't get to sit at the back. Yeah, exactly. We Yeah. all are missing it. Like that Yes. 10 to 5, 9 to 5 schedule is like totally, we are missing it. Yeah. Like अब internship में आ चुके हैं कि अब You पता ही नहीं are चलता यार. Like now, yes, आप सुबह से लेके शाम तक you are on your toes अभी yeah, internship में. exactly, exactly. So like you are like in the internship program, more or less in 10 months or something, you will complete your internship program and you will Yeah, become a 11 full-fledged months. doctor. Yeah. Yes. So like if I ask you to describe your college journey, how you will describe it? Like सब एक 5.5 साल की जो यूजी डिग्री होती है, उसके बाद चाहे आप पीजी करो चाहे पीएचडी करो, यू विल नॉट सिट इन दैट ग्रुप ऑफ 50, 60, 70, 80 स्टूडेंट्स. तो वो यूजी Yes. लाइफ अब खत्म हो, कहते हैं ना गोल्डन पीरियड खत्म होने वाला है. Come on, So like. like for me, for you, like this golden period is about to end in 10, 11th month or so. So like how you will describe your college journey? Like for me, it's a like roller coaster ride. कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी बहुत खराब हो जाता है, कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी कोई टीचर डांटता है, कभी कुछ एक्टिविटी नहीं होती, कुछ नहीं होता, कुछ भी मन नहीं लग रहा, ऐसा लगता है जेल में जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में जा रहे हाँ. हैं. सो लाइक हाउ अबाउट यू, लाइक व्हाट यू लाइक अबाउट योर कॉलेज लाइफ? Yeah, same. I'll totally agree with this, the roller coaster thing. It's the first thing, it's a long journey. 6 years, man. Like Yeah, exactly. if we include this internship period also, a total of 6 years, it's a long ride. Yeah. So it's full of adventure, like like getting thrown out of the class, tests, internals, prepping. So it's an amazing journey, man. At the end of the day, I'm happy. Yeah, That's it. exactly. We should always be happy कि like Yeah, ये 5.5 साल की जो भी हमने जर्नी, छह it's साल की a जो भी जर्नी हमने it's जी a है. big chunk of your life, like Yeah, 5 to 6 exactly. years, It's and it's going to change the trajectory of your life. yeah, exactly. Like this will be a part defining way. Like Yeah, from this particular UG degree, we'll go for the different branches in PG if we pursue. After that, we'll you go for PhD, or after we'll go for something else. But ये जो 5.5 साल people, है, obviously, ये हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने वाले हैं. Like we are not going to forget this till the end of our yes. life. So I hope like we should always cherish like what the moments we are enjoying, like whatever we have right now. अभी जो हमारे पास है, शायद काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, काफी ऐसे लोग होते हैं जो इनके बारे में like they crave for the things. And I should think Hmm. like everybody who is enrolled in any sort of courses like should enjoy every bit of it. Exactly. Sure. So like Aman, you are so much in like you are so engaged in so much of domains. Like you do podcasting, you do Instagramming, you took uh, so many interviews of such a great personalities Yes. like DV Reddy sir, and you are a writer also. So tell us about your all domains you are engaged in along with I've your academics. Yeah, sure. I feel like during your college life, you should explore all the opportunities and all the field of interest. Whatever you find like interesting, you should pursue that thing. At least to an extent, like you are enjoying that. For me, I wanted to do something related to veterinary medicine. So, along with my writing skills, I opted writing. I started the geekvet.com to write this blogs, podcasts, and then I just went a little into published a article or a paper, review articles in journals. So, this and things started to happen. This is like how you manage your time. Like academics से अगर मैं बात करूं, जिन लोगों को नहीं पता होगा, 5.5 साल के टाइम स्पेन में हम तकरीबन 17 से 18 सब्जेक्ट्स को पढ़ते Sure. हैं, ठीक है. एंड सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो वो सब एक एक दूसरे के ग्रंथ हैं. लाइक वेटनरी Hmm. फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी. भाई पढ़ना चाहे आदमी तो सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक पढ़ता ही रहे, उसे Right. आंखें उठाने का टाइम नहीं मिल सकता. So Really. like how you manage to get into so much of a great dome, like
nice domains like podcasting, Instagramming, taking क्या कहते हैं interviews from different people and writing. So like how you manage your time? Like what was your schedule that you follow all the time? Like सब चीजें manage हो जानी चाहिए and they perfectly align and you're doing such a great things. Like you are such a motivation for everybody outside, like student like you who is doing such great things in UG. like मैंने पहले भी बताया अमान का जो गीक वेटेरियन चैनल है, साथ ही साथ अमान ने डीवी रेड्डी सर का भी इंटरव्यू लिया था उनकी बुक के लिए, एंड सो मेनी अदर ग्रेट पर्सनालिटीज. सो लाइक हाउ यू मैनेज ऑल दिस गाय? I to give you the correct answer, an incident happened with me. It was back of 2018 when I was prepping for my NEET. I went to IMA to meet a army official, a ओके. known person, yeah, high ranking official. So या. we were discussing something related to timing. So मैंने कह दिया कि टाइम नहीं है, समथिंग वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्पोर्ट्स बिकॉज़ आई वाज़ prepping for, and you know how the NEET times were, you are packed classes, test series, या preparation, एग्जैक्टली. revision. You know, so या. then he said to me, this thing, it stayed with me. It didn't hit me hard back then, but then later it stayed. Something in your subconscious, it becomes conscious in a later time. So he said to me, everyone has 24 hours. या एग्जैक्टली. Neither I am Neither he is getting 22 hours to do his job, neither Elon Musk is getting 26 hours to do his job. या I am एग्जैक्टली. also, एग्जैक्टली. everyone is getting 24 hours. You have या. to be conscious of the time you are getting, the 24 hours. That thing changed the trajectory of my life, and I'm following that thing. The 20, ओके. you have to be conscious of your time. That's it. लाइक या एग्जैक्टली, where there is will there is way. like हमें अपना रास्ता Obviously. खुद ही ढूंढना पड़ता है. like everybody is getting 24 hours, that is very true. And looking at you, like I have been through your website and all those podcasts and all those videos that you have uploaded over your channel. like yeah, you did a great job, dude. Like you're such a great person, you did a great job. Thank you, man. And to all the viewers who don't follow him yet, do check the comment box and the description box, you will find his channel. And literally Aman, like I don't think so ki like ever I would have done an interview with Dr. DV Reddy sir, and you did a great job. Like literally, hats off to you. Thank you. It was So a book review of his, the book he launched, my memoirs. yeah, exactly. The book Memoir by DV Reddy sir. So he reviewed Yes. that book with him. So like, how do you keep yourself motivated? Like काफी सारे ups and downs आते हैं. Like बहुत honestly मैं बताऊं यार, मेरे marks कभी कम आ जाते थे तो I feel so depressed यार, because मैं flex नहीं कर रहा. I was a good student back in my school days, and when I came into the college, I tried to maintain that same trajectory. So I tried hard, but कहते हैं ना, like in नहीं school होता है. things were different, but when you रेंट are in या college things are so different. like schedule change हो जाता है भाई. मैं फैक्ट. हॉस्टलर हूँ, हॉस्टल में रहना, and everything was like so fucked up and so chaotic कि मेरे मार्क्स कम आने लगे. I was so depressed, like कैसे करूंगा. And I wasn't like, I was losing motivation, inspiration. So like how you keep yourself motivated? Like doing such great things needs so like strong motivation and inspiration. So like what is your source? Breakdowns, yeah, breakdowns happen. Yeah, Breakdowns, it's the mirch masala of your life. Breakdowns, ups and downs, they change the trajectory or thought process. They are everything. So you have to deal with them. It should not impact your psyche on a major sense. It should not, like, you are depressed, like I'm getting 22 marks, I'm getting passing marks. You have the opportunity to work on that thing. You can study if you're getting less marks. For me, I'll give you an example. Extension education for me was the it I got very least marks in that during internals, and that thing scared the shit out of me. So I knew, like, मेरे को pass करना है वो. For me, I set my priority. भाई मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मेरे को पढ़ना है. Then I started working hard. फार्मा उतना नहीं पढ़ा, फार्मा में अच्छा आ गया. मेरे को पता है कि मेरे को एक्सटेंशन निकाला. तो you have the control कि ये क्या करना है. ज्यादा दिमाग खराब हो गया आपका, एंग्शियस हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, ठीक है, होता है सबके साथ. वी ऑल आर ह्यूमन एट द एंड ऑफ द exactly, डे. exactly. I बट get that. उस चीज से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस हाथ में हाथ बांध के यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा वाले नंबर का यू नहीं भाई. तू ठीक है, थोड़ा सा हो जा, घंटा एक घंटा, हैव अ फ्रेंड,
have good friend, be connected with your friend, talk to them, यार नहीं हो रहा है कैसे करना है, teacher से, you just have to get through it. It's a Okay. part of your life. Yeah, exactly. Like it's a part of like failure will teach you how Yeah, to get like this is not the way to do the thing. Like अगर हम किसी चीज को obviously. एक बार में नहीं कर पा रहे, दो बार में नहीं कर रहे, शायद थर्ड टाइम अटेम्प्ट देते हैं, कर तो लेंगे ही। ऐसा कोई भी Oh, चीज इम्पॉसिबल नहीं है। Like it's a like great saying, impossible में भी possible छुपा हुआ है, isn't it? hmm. So like 17 से 18 सब्जेक्ट होते हैं 5.5 साल की इस डिग्री में। So like what was your favorite subject by the way? Like सबसे अच्छा क्या लगता था? Like मुझे मैं It कहूँ तो had like to I like be, it had to be yeah. physiology. ओके दैट्स ग्रेट। सो जिनको I'm, नहीं पता होगा वेटरनरी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू एमएससी uh, 2016। सो लाइक वेरी इन द बिगनिंग ऑफ योर डिग्री कोर्स यू चूज योर सब्जेक्ट। लाइक 5.5 साल में बहुत सारे I सब्जेक्ट होते हैं, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए। एंड I भाई still I still read physiology, man. You will find me like reading because I love how our body function. Physiology दैट्स talks about the function. It's very amazing. The This is the very thing that attracts me to biology. The functioning, how we are complex, the creature, everything from a little neuron to a heart tissue, everything is all interconnected. It's just amazing. So yeah, physiology has to be my first subject and parasito. Like ओके people say, why parasito? Yeah, second this. Yeah, these two ओके were my first yeah they are two such a favorites. like quite interesting subjects like parasitology and physiology. They both are quite different but they are still quite interesting, I would say. Yeah. A great choice, man. So moving on. So basically, like you are in so much of domains, like writings, blog writings, and taking interviews with so many Interviews. people. So like यार जो writings हैं तेरी, जो तुमने articles वगैरह लिखे हैं, book publish कराई, like or is like when I talked to you, you were thinking of writing something, you were into some Yeah. projects. So could you tell us about like what were those things and what are your future plans about the same? Okay, so I was reading a lot of literature. I am a writer and a poet, as I said. It was the first thing I used, a writer. So this is the first thing which then a veterinarian. So Yeah. I have published with the this what we say, a writer's pocket, a big anthology, name publishing house. The Bookaholics का paper town उनके साथ anthology publish किया. So this started, and then I started writing about veterinary medicine, started the blog, and then I just change. You have to keep going. That's it. And for future plans, I'm just working right now. I'm just into a learning zone. I'm just open to everything. So yeah, we will see Okay. how it goes. Yeah, and all the best with the same. Like you're doing Thank such you, a man. great job, and I would say like in coming 5 or 6 years, you will be a great writer, great blogger, and Amen. everything else. Like what you're Amen. doing is like You काफी too. सारे लोग You too, brother. You too, हाँ Dr. Kaushik. You are also doing great, फिंगर्स man. क्रॉस या फिंगर्स क्रॉस लाइक काफी सारे लोग बताए, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट से बात होती है, काफी सारे मेरे साथ के लोग हैं बैचमेट्स, और काफी सारे मेरे स्कूल मेट्स, लाइक दे आर इन कॉलेज, some of them like are passed out, like they are like doing jobs and all. सब यार सोचते रहते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दिमाग में तो काफी सारे आइडियाज हैं, बट दे नेवर टुक दैट फर्स्ट स्टेप कि भाई चलो करते हैं। ठीक है। तो You have to take the first step. I live by this quote. I am fine with my life being turning end into a tragedy rather than a comedy. एग्जैक्टली I एग्जैक्टली live by this quotation. या I'm एग्जैक्टली fine with, या yeah. या लाइक मैन कि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि लाइक सामने वाला क्या सोचेगा, आई डोंट थिंक सो। अगर इस सोच से हम चीजों को करने का मोटिव रखते हैं तो आई वोंट से कि कभी भी हम कहीं पे भी पहुंच पाएंगे। लाइक सामने वाला तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा, इट्स आइदर दिस वे और आइदर दैट वे, एंड यू डिफाइस देम इन अ ग्रेट इन एग्जेम्पलरी वे यार। लाइक लुकिंग एट योर वर्क इज like how he managed to do all this यार। लाइक मैंने तेरे जब अमान आपसे सबसे पहले बात करी थी, आई तो लाइक मैंने सारा इंस्टाग्राम, सारी वेबसाइट, सब कुछ देख लिया। लाइक एक बार पूछूंगा जरूर, लाइक लाइक इसके पास टाइम भी है थोड़ा बहुत। लाइक यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब गाइड, बट यार हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर। Thank you, man. Just you are also doing managing everything, running your YouTube, reaching out to. I feel like everyone should start doing something else rather than their being stuck into their academics until unless they are exceptional in their studies. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली लाइक आई डोंट थिंक सो कि एकेडमिक्स में आप रहते हो तो एकेडमिक्स से ही आप सब चीजें गेन कर लोगे।
काफी हद तक ये चीज सही है, बट हम्म। ऐसा भी नहीं है कि आपने एकेडमिक्स के अलावा कुछ अदर आइडियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी एंड दे विल स्टार्ट डिटोरेटिंग यू, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आई थिंक सो। मैं आई लिव बाय दिस थिंग कि भाई करके तो देखो थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं कुछ सही चीजें बात है। ऐड ही होंगी, यू विल फाइंड आउट सम अदर वेज कि चलो ये मेरा डोमेन शायद नहीं था, यू जस्ट हाँ। गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ एंड यू जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ। और आई थिंक सो तो, एक्सप्लोरिंग समबडी, लाइक मैं खुद को एक्सप्लोर करता, आई स्टार्टेड यूट्यूब कि चलो स्टार्ट करते हैं, लाइक लोगों का थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। एक वेटनरी स्टूडेंट था मैं, आज एक इंटर्नशिप स्टूडेंट हूँ। द जर्नी वाज नॉट क्वाइट इजी फॉर मी, बट धीरे 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 आई लर्न सो मेनी पीपल, आई कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल, एंड आई डोंट थिंक सो कि लाइक आई कनेक्टेड because of this YouTube to such a great personality like you, Dr. Aman. And this was all this. humbling, man. So this was this. So हाँ, let like me tell you. yeah, Yeah, what you said na, YouTube wala thing, like we both are YouTubers, right? So yeah, exactly. it's changed all your like mind का पूरा process कि भाई आप अपना YouTube भी कैसे manage करना है, ठीक है, वीडियो कैसे कनेक्ट करनी है, लाइटिंग, एक आपका हर चीज अलग वो, it adds to your thought process कि भाई मेरे को बंदे भी लेकर आने हैं YouTube के लिए, इंटरव्यू करना है, तो उनसे कनेक्ट करना है, you are, it's adding to your skill set. Yeah, exactly. The skill If sets are we like, if we if we like cut it down to a skill set, you know video editing, right? You know how to set up lighting, you know वीडियो कैसे एडिट करना है, you know कि ऑडियो कैसे करना है, कि भाई ये इशू आ रहा है, कि भाई नेटवर्क का इशू आ रहा है, कैसे कर, you are learning, it's changing your psychology as well. yeah, So exactly. I Agree. I I totally relate with this thing कि यार कर सकते हैं आप कुछ, you need to take the first step. Yeah, exactly. So like, could you tell us about your struggling phase? Like, start करने से पहले एक स्ट्रगल होता है दिमाग में, एक अंदर एक बैटल चल रही होती है कि लाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड फाइनली वी like drop down to a You decision think कि अब करना हाँ. है. So that struggle, like what you have gone through and what you are going through right now, like I know कि this journey is not easy for anyone, ठीक है? So like what was the thing कि क्या स्ट्रगलिंग फेस रहे डॉक्टर अमान आपके, एंड along with that like how you cope up with all those things? uh it was amazing, man. Like it happened during the COVID lockdown time. It was like the end of first year as we both enrolled in 2019. So Yeah, 2020, mid of 2020, it was all frustrating, man. Classes सुबह से लेके शाम तक, yeah, exactly. पूरा ज़ूम पे, कुछ नहीं हो रहा है, घर पे बैठा, तो इट वाज़ फ्रस्ट्रेटिंग, आई वाज़ नॉट एबल टू कोप अप विद द, लाइक यू आर रीडिंग बट यू आर नॉट एबल टू, लाइक आप टीचर बोल रहा है, स्लाइड पे पढ़ा रहा है, बट यू आर नॉट सीइंग दैट, तो इट वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, कहीं Yeah, तो exactly. चैनलाइज़ करना था। तो आई यूज्ड टू राइट, मेरा इसका चैनल था, मैं कोटेशन, पोएट्रीज़ और ये सब लिखता था, बट देन इट वेंट लो। देन आई वाज़ लाइक कहीं तो चैनलाइज़ करना है वेटरनरी मेडिसिन से, कुछ ना टच में रहना है, क्योंकि भाई आप वही वेटरनरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एलपीएम कितना पढ़ोगे, you आप नहीं पढ़ सकते। Exactly, Then I exactly. started then I started scouring through the research paper, article, because reading was like it was core to me कि पढ़ ले रहे हैं, कि बैठना था, कि it was सिरदर्दी नहीं थी कि भाई पढ़ना है, reading was not a headache for me. तो I started scouring through, उससे अच्छा कि ये चीज़ है, वो मेरे को ये नहीं पता है। Then I was like कि ठीक है, मैं इसको राइटिंग में चैनलाइज़ कर सकता हूँ। देन बाय ब्लॉग स्पॉट पे किया हिस्ट्री, आई वाज लाइक हिस्ट्री क्या है, कि भाई वेटनरी मेडिसिन इतना है, हम एनिमल्स को ट्रीट कर, कुछ तो हिस्ट्री रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री मेरे को बहुत फैसिनेट करता था, कि वो आपका पास्ट बता रहा है कि भाई क्या हुआ, उससे आप क्या लर्न कर सकते हो, और यू कैन लाइक इन योर प्रेजेंट में क्या अप्लाई करोगे, एंड देन इट विल बिल्ड योर फ्यूचर, कि भाई आपको फ्यूचर में मिस्टेक नहीं करनी। मैंने कहा वेटनरी मेडिसिन में कुछ होगा, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग की, देन आई गॉट टू नो अबाउट शालिहोत्रा, कि भाई ये बंदा था इंडिया में, इसने काम किया, देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर, फिर वो स्टार्ट किया, इट वाज माय फर्स्ट की वेटरनरी किससे स्टार्ट करते हैं, देन इट ऑल स्टार्टेड, देन इट्स ऑल हिस्ट्री। Yeah, exactly. So like अमान, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, काफी सारे व्यूवर्स, काफी सारे वेटेरियंस और काफी सारे लाइक एस्पिरेंट्स और द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, लाइक वो आर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि काफी सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं, लाइक पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी एंड पीपल लाइक मेनी अदर, कि जो लोग देखते हैं सोचते हैं कि भाई सामने वाला बंदा तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्या हम कर सकते हैं? तो लाइक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सेम, लाइक इट्स आइदर पॉडकास्टिंग, doing something on Instagram, doing book reviews, writing,
writing review articles or anything, like what should be the very first step according to you? Like you've been into so many good things and so many good domains, like you can be a good good mentor for everybody. So like what? I'm happy to mentor anybody who's going starting this stream. To answer this, believe yourself man, you can do it. तू कर लेगा. बस अपने पे तू बिलीव करके रख भाई, दुनिया को नहीं फर्क पड़ता तू कुछ करे नहीं करे, तेरे पे अपने पे बिलीव है ना, तू उखाड़ लेगा कुछ जीवन में. टू बी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जस्ट बिलीव, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ. Yeah, exactly. बाकी थिंग्स विल फॉल ऑन योर प्लेट कि तू करेगा. तेरे को पॉडकास्टिंग स्टार्ट करना है, तू गूगल पे सर्च कर ले. यूट्यूब एंड इंटरनेट इज अ बिग एडवांटेज फॉर अस टू स्टार्ट एनीथिंग. Yeah, exactly. You just Yeah, have to first thing, if you are not believing yourself, if you are like doubting yourself, don't doubt yourself. सोच लिया कि भाई मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना है, यूट्यूब स्टूडियो पे जाके हाउ टू स्टार्ट, जस्ट मेक अ अकाउंट, स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग. योर फर्स्ट वीडियो विल नॉट बी गुड. तेरा चाहे कितने से भी अच्छा कैमरा ले ले, मल्टीपल ड्राफ्ट्स आएंगे, कट आएंगे, ऑडियो का कुछ इशू आएगा, पहला वीडियो कभी नहीं सही होगा. इवेंचुअली यू विल ग्रो कि अच्छा हाँ ये इशू आ रहा है, यू कैन लर्न. तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. मैं भी अभी ग्रो ही कर रहा हूँ, मैं भी लर्न कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें. exactly. पहले मैं अभी व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट एडिटिंग, आई वाज ऑन प्रीमियर प्रो, आई टोल्ड कि यार ये चीज ऐसा कर सकता है तू एडिट, तो वी वर डिस्कसिंग राइट, एंड यू Yeah, वर लाइक ये exactly. किसी ने मेंशन नहीं किया. when we so you and you get people to tell you things कि यार तू ऐसे कर सकता है. when I was in writing back in late 2018, तो मेरे को एक बड़ा चैनल का क्या कहते हैं, जो फाउंडर था उस बंदे ने मेरे को कैनवा से इंट्रोड्यूस कराया है कि ब्रो यू आर डूइंग गुड, यू कैन यूज दिस थिंग. एंड कैनवा हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग टूल फॉर मी. So you get people, even though you are in a very initial stage, you will find people to support you, to Yeah, uplift you. exactly. So you just have to believe yourself and just do it. Yeah, start from the scratch. I don't think so कि scratch से start करना कभी भी गलत होता है. Take your camera out, take your laptop off, or take your what, take anything that you have and just start doing it. Yes, yes. Things will get aligned according to you. And if you are learning, that is the like biggest thing I think so, कि कोई कुछ भी gain नहीं कर रहा है, he or she will learn out of it. like जरूरी नहीं होता है कि हम सिर्फ gain करने के perspective से किसी चीज को करें. I think so. Like I feel I feel like जब हम लोग यूट्यूब पे हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ नंबर्स राइट, कि yeah, भाई हमारा exactly. कितना सब्सक्राइबर काउंट है, कितना रिटेंशन टाइम है. वो चीज ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर यूट्यूब जर्नी राइट. बट Yeah, उसके अलावा भी और भी चीजें आप कनेक्ट कर रहे हो लोगों से, लाइक आप उनसे स्टोरी, लाइक आई डू इंटरव्यूज, आई हैव स्टार्टेड दिस डॉक्टर ऑफ एनिमल किंगडम ऑन द गीक वेट. आई टॉक विद ऑल सॉर्ट ऑफ yeah, veterinarians, I've talked with virologists, all sorts of. So you are कनेक्टिंग विद देम राइट ऑन अ पर्सनल लेवल, उनकी आप जर्नी जान रहे हो, एक उनसे आप अलग कनेक्शन डेवलप कर रहे हो, दे आर देयर टू हेल्प यू. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है. आपका मैट्रिक यूट्यूब का कम ज्यादा हो सकता है, yeah, exactly. यू शुड नॉट जज योरसेल्फ बाय दैट मैट्रिक. भाई तुम जब तुमने स्टार्ट किया था 0 सब्सक्राइबर था, आज Yeah, जाके तुम्हारा 4 के 5 के 1000 के हुआ है ना, तो यार वो जर्नी को मत भूलो. अगर वो 0 से 100 पहुंचाए, खुश रहोगे भाई, इतना बढ़ा लिया ना, वो भी ठीक है. आगे yeah, और बढ़ जाए, जस्ट डू इट योरसेल्फ, डोंट लेट इट बी लिटिल योर एफर्ट्स. yeah, exactly. Like numbers do matter, but I don't think so कि ऑब्वियसली, आप सिर्फ और सिर्फ numbers के पीछे भागोगे. I don't think so you will ever be able to get something out of it. Like numbers राइट, are something that you should be concerned of, but not entirely you should be dive into it. क्योंकि बहुत सारी ऑब्वियसली चीजें होती हैं जो numbers के बाहर निकलने के बाद ही हमें कहीं ना कहीं पता चल मिलती पाती है. हैं. Isn't it? राइट. Exactly. So like is balancing college life along with your passion and all this domains that you are into was easy for you, Dr. Man? I will not say it is easier, but you have to set the priorities and where you want your life to go. Yeah, That exactly. Like if and what I said about that 24-hour thing, everyone yeah, is getting 24-hour yeah, thing. exactly, exactly. Elon भाई is planning to start plotting on Mars, and I am sitting कि कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ veterinary कर लेते हैं. You have to set the priorities clear. Uh, That's it. you have to change your mindset accordingly. Yeah, Obviously, and you just don't have to follow the flock कि like VO ही करना है, कि गवर्नमेंट में घुसना है. Veterinary medicine has a lot of uncharted territory. yeah, exactly. Behave अभी है,
इंडिया में बिहेवियर मेडिसिन, लाइक आई एम अ पर्सन ऑफ बिहेवियर, लाइक आई सी डॉग बहुत सारा इंडिया में, हम उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अनचार्टेड टेरिटरी। देयर आर वन और टू प्लेयर्स इन बिहेवियरल मेडिसिन इन इंडिया, राइट? एक्वाटिक्स है, मरीन लाइफ है, भाई इतना बड़ा इंडिया का ओशियन कोस्ट लाइन है ही नहीं हमारे पास वेटनरी का, अभी थोड़ा रिसेंटली आ रहा है। So there is a lot of potential other than the set framework of veterinary medicine which is being followed by the masses. So you have to go a little beyond that. लाइक एग्जैक्टली अगर पिछले 10 सालों का नंबर्स हम उठा के देखें, पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें, तो लाइक ट्रेंड इज चेंजिंग। लाइक अगर जो बंदा 10 साल पहले भी वेटनरी करके आया था और आज उस बंदे से अगर हम बात करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ही विल हैव द सेम आंसर व्हाट ही हैव और व्हाट शी हैव Yes, बैक इन 10 years। लाइक चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर अमान, लाइक बैक इन 2019 व्हेन आई एंटर्ड इन दिस पर्टिकुलर डिग्री कोर्स, आई डोंट थिंक सो काफी लोगों को पता भी था, काफी लोगों को नहीं पता था नहीं कि पता लाइक करना कैसे है, क्या है। बीपीएससी एंड एच होता क्या है। लाइक everybody, like there is a very common Hindi slang for like veterinarians, like ये तो ढोरों के डॉक्टर होते हैं। और डॉक्टर है। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर अमान, कि भाई ये चीज जो है ना, धीरे धीरे 2019 से 2024 में हम लोग हैं इस समय, आई थिंक सो ये पर्सपेक्टिव भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है लोगों का। क्योंकि लाइक नाउ पीपल आर नॉट थिंकिंग बीवीएससी एंड ए जस्ट एज एन ऑप्शन, कि भाई ऑप्शन है कर लेते हैं, डॉक्टर लग जाएगा, उसके आगे देख लेंगे जो होगा। Like everybody is now not sticking just to VO or the government job. गवर्नमेंट Like many of my seniors are going for the like postgraduate course, PhDs, and like even though like पोस्ट postdoctorate डॉक। fellowship, यस, like everything, like they are saying कि like हम अगर अपने कोर को, अपनी एकेडमिक नॉलेज को अगर गेन करेंगे, उसको पॉलिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वी आर जस्ट पॉलिशिंग दिस पर्टिकुलर लाइक फील्ड आल्सो। लाइक क्योंकि फील्ड में काफी सारे लोगों की सोच अभी भी कहीं ना कहीं पीछे ही अटकी हुई है, सही में कि भाई है। कुछ करने के लिए है नहीं, 4 इंजेक्शन लगाने, 4 इंजेक्शन में वेटरी खत्म हो जाती है। अच्छा सो दी है। ऑल दोस व्यूअर हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम जस्ट वांट टू कन्वे दिस थिंग कि लाइक आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है, क्यों, इजंट इट डॉक्टर? नहीं, बहुत वास्ट मेडिसिन, यू टॉक्ड अबाउट द 4 सेट ऑफ मेडिसिन एंड आई हैव सीन दिस बी प्रोटोकॉल बीइंग फॉलोड everywhere, but there are people who are into different varieties of medicine. They are prescribing all sorts of, depending on the disease or the condition which is presented to them. They are not following that four set of pentov, cefotaxime, not this. Yeah, They are exactly. exploring other medicines as well. So yeah, it's just people's mindset. You have to be, you have to take the pain to go out of that framework. It's a Exactly. pain. It's not an easy job to do something out of the league. They are Exactly. going to Exactly. judge you like why you are doing this, why you have to do this. अरे stick to the framework now. क्यों करना है यार वो चीज? ठीक है. So you, it's a pain. It's not an Yeah, easy job, and exactly. people Exactly. are doing. I'll give you example of Dr. Kasturi Bhansale. I it's a small, the eye vet. She's the first veterinary ophthalmologist in India. Yeah, Right? She's exactly. working with eye. It's just an object which is very much neglected in veterinary medicine. Yeah, exactly. Like nobody But is concerned about कि like जानवर है, आंख चली गई कोई दिक्कत नहीं है, गाय की आंख चली गई तब भी दूध तो देगी ना, लाइक प्रोडक्शन हमें मिलना चाहिए, बाकी सब चीजें हम। exactly. But now look at her. She went out of the field, like I, right? And then Dr. Nupur Desai. She's working with oncology, Yeah, right? yeah, The cancer vet. She's yeah, working with this. So people are going out of the league. If they are doing this, you can also do that yeah, thing. exactly, exactly. And That's having it. like having a narrow mindset will never take you to anything, I No, think so. it's going to asphyxiate you, nothing या else. एग्जैक्टली, लाइक इस लाइक मुझे समझ में नहीं आता है, लोगों का इतना छोटा माइंडसेट हो जाता है कि लाइक वेटनरी की डिग्री करते करते तो लोग कहते हैं कि भाई 17-18 सब्जेक्ट है, 5.5 साल कैसे कटेंगे। लाइक ये उनके, आई एम कोटिंग कटेंगे। देम, कि कैसे कटेंगे, कि भाई ये तो गुजरे नहीं गुजर रहा है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, कुछ करने के लिए नहीं है। भाई लाइक इफ यू वांट टू डू इट, इफ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, लाइक ब्रिंग इट इन योरसेल्फ फर्स्ट यार, उसके बाद सोसाइटी धीरे ऑब्वियसली धीरे मैन, चेंज हो ही हो जाएगी। जाएगी। लाइक यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। स्टेप। लाइक पहला अगर आपने स्टेप ले लिया किसी चीज के लिए, और लाइक टेकन एन एग्जांपल ऑफ यू डॉक्टर, लाइक आई डोंट थिंक सो कि वेटनरी साइंस का कोई स्टूडेंट ब्लॉग राइटिंग करता है, स्पेशली
अभी तक मुझे नहीं लगता कि लाइक डॉक्टर ऑफ एनिमल किंगडम दैट यू स्टार्टेड, ऐसा किसी ने कोई पॉडकास्ट शुरू भी करा, कोई लाइक रिव्यू ऑफ बुक विद डॉक्टर डीवी रेड्डी, शायद ही किसी ने कर रखी है। लाइक यू स्टार्टेड इट यार, एंड यू स्टार्टेड इट सच अ लाइक इन अ ग्रेट वे, आई थिंक सो। मुझे नहीं लगता है एक परफेक्ट स्टार्ट जैसे तूने करी है यार, इससे अच्छी कहीं हो सकती है। Starts, I will say, thank you for mentioning everything, but starts are not going to be very polished or very Yeah, smooth. exactly. It's going to have ups and downs, Yeah, jumps, exactly. Exactly, difficulties. exactly. So you just have to accept. You have to have shock absorbers, right? Yeah, exactly, exactly. As bikes and cars, they are fitted with shock absorbers. You Yeah, also exactly. need to have shock absorbers, and you Totally, just totally need to agree. take the first step. That's Yeah, it. yeah, exactly, exactly. So, like, Aman, like, what are your future plans? Like, right now, you're about to complete your undergraduate. Like, you're planning for postgraduate, PhD, or you're going to switch something. Like, what it is? To be very honest with you, Dr. Kaushik, I am open to everything right now. I am in a learning phase. I am like for 1 or 2 years, I'm just going to learn, and then I'll be, because if you accept anything in hurry right now, your PG, if you are going into animal sciences, it is going to stick with you for your whole life. You cannot then on a high level, you cannot change the trajectory of your life where it will go. Right. So I am open to everything, whatever comes to my side, the opportunities, whatever my like going internship, everything. So I'm open to everything right now. No That's great. concrete plan, No, just no, no concrete plans. yes. That's great. Like, you are open to everything, and I would say, ki, like, if you are open to the like, if anything, shayad you will able to choose what is best for you. Like, Exactly. You'll get the taste of everything, right? yeah, If as we are in internship, like if you're interested in zoo 10, 15 days, which is not very much, so if you are like feel like I want to explore this zoo thing a little more, then you can go and work with zoos after your degree and yeah, right, exactly. and then you can feel like, no yaar, I am not liking this zoo thing, I'll explore something else. So this gives you a little flexibility in your plan and as well as in your life. Yeah, and exactly. i feel like and I feel like it depends on individual to individual and their priorities, because everything, not only your degree, your life, your family, your personal life is also connected with this, so you have to be very wise in choosing that future track. Yeah, exactly. Like, once you choose, you have to work. So I just say कि like Yeah. पहले थोड़ा सा चूज करने में टाइम ले लो, क्योंकि बाद में जाके क्रिप करना आई डोंट थिंक सो uh कहीं से कहीं पे जस्टिफाई नहीं, होता है। it's not good like 30 or 30 35 years old guys are crying कि यार हम कुछ और कर लेते. It Yeah, won't exactly. look good because you are a 30-year-old guy. Yeah, you have to take your decision so wisely. And thanks to Dr. Yes. Aman, like he is like open with every discussion. I would say कि जितने भी veterinarians इस वीडियो को देख रहे हैं, वो are aspiring like any first year student, second year, third year, fourth year, and they are in this dilemma कि यार आगे क्या होगा? भाई आगे जो होगा अच्छा होगा, but you have to start it. अब आपने स्टार्ट नहीं हाँ, करा, बट हम सोच रहे हैं कि भाई सब चीजें अच्छी हो जाएं, so it's ख़याली not पुलाव going to से कुछ नहीं happen. होगा, Yeah, actually it's ख़याली not पुलाव going से to कुछ नहीं happen with होगा। this particular degree only. अगर आपने वेटनरी कर लिए तो ऐसा नहीं है कि वेटनरी में ही अच्छा नहीं होता है। अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे होते, इवन दो आप आईआईटी से भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आपने अपना माइंडसेट ही चेंज नहीं करा है, तो शायद आईआईटी आपको कुछ भी नहीं करा पाएगी। पाएगा। Like he will, like IIT will just give you the tag only, like you are an It is, IITian. I feel like IVRI, IIT's aims are the software. Yeah, You should exactly. know how to utilize. Yeah, exactly. It's user based. How आप कितने अच्छे से वो जो रिसोर्स आपको दे रहा है उसको कैसे निचोड़ के अपना फायदा कर सकते हो. या एग्जैक्टली, That's लाइक it. आई डोंट थिंक सो कि लाइक इस तरीके का माइंडसेट अगर हमारा होता है, लाइक वेरी नैरो माइंडसेट से हम चलते हैं, सो इट विल टेक यू एनीवेयर. सो लाइक एनी एडवाइस फॉर ऑल दोस व्यूअर्स एंड एस्पायरिंग veterinarians and upcoming veterinarians like Dr. Aman? First of all, I would like to give the first advice that I want to give. I give to all of my juniors who are in connection with me. Read foreign authors of the subject, whatever you are reading. Read one subject, one topic, one chapter from that book. Just go through it. Yeah, If you change your mindset, you want to go and write NAVLE or RCVS or any international exam, at least you will be knowing कि हाँ, okay, ये book है मेरे को आती है, because every foreign author, every writer has a different writing pattern. You
read a book, Duke's Physiology, it's very different. You read Guyton and Hall, very different writing pattern. So you'll be well versed with that book. It's not like you have to memorize everything. You should know, then it will help you in the future. Even though if you will not go for your NAVLE or RCB, go abroad, it will help you in India. Yeah, exactly. Because you will be well versed with that topic कि you know अच्छा ठीक है मेरे को ड्यूक्स में पता है कि भाई मेरे को ह्यूमन फिजियोलॉजी कहाँ पे you'll know कि अच्छा हाँ ठीक है वीएफए क्या होता है क्या क्या बेटर मैकेनिज्म होगा वो तुमको पता होगा नंबर आए नहीं आए दैट्स अ डिफरेंट थिंग तेरे को पता है कि अच्छा हाँ ये चीज है तो वो चीज अल्टीमेटली तेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे मिलेगा सो रीड इंटरनेशनल ऑथर्स that's my advice to the first years. Like, make this habit Yeah, of yeah, reading foreign exactly, exactly. authors. And if you are someone who is going to start out of the academia, just do it, man. As Phil Knight say, Nike founder, just do it. Yeah, So just do it, and whatever it takes, just stick to it and believe yourself. yeah, exactly. Believing yourself is like the most important thing. Like starting from the scratch, never Yes. being wrong, as I already said this. And so that was Dr. Amaan Ghazi. Thank you so much, Thank you. Doctor. Like it was such a great talking to you. I just like I feel motivated looking at your videos and looking at your Instagram handle, everything. Like you are great, such a great personality, and such a great veterinarian. Thank you, Doctor. So if you Thank like you. this interview, Thank you, Dr. Kaushik, for having me. And it was great to share all the experiences that I gained through the life. And all the best to you as well. You are also doing great, bringing different perspective to veterinary medicine. thank you, I had a Dr. great Aman. time talking to you, man. Sure. Thank you, Dr. Aman. Hopefully, we will connect again Yeah, in of course. near We will. future. We will. Definitely, we Right. will. Definitely, we will. So that was Dr. Aman Ghazi. Thank you, Doctor. It was such a great talk with you, such a great session, I would say. Thank you once again. So if you like the video, hit the share button, subscribe the channel, do comment your queries in the comment box. I will try to reply them as soon as possible. And don't forget to check the description box below for every handle of Dr. Aman, whether it is Instagram or his YouTube and his website also. Share the video, hit the like button once again. Take care. Love you all.